Good morning. Hope you all are fine. So let's begin our chapter without wasting any time. So in the previous video we discussed about what are the different types of map, how the map work, what are the different components of map, what is cardinal point, what is intermediate directions. So now we will discuss about the symbol, sketch and plan. Symbol is also play an important component of a map. Symbol we can't we can't draw in actually, we can't draw well road in actual, so we use, instead of drawing we use certain type of symbols, and these symbols are very universal because you know that India is a vast country. Even uh, universe is a vast even in India is a vast country, so it is not possible to understand each and every language. So instead of using language we use symbols, and these symbols are understood by all, so there will be no language barrier. And for the international purpose also, some symbols are also used regarding the certain points, so these symbols are called conventional symbols. So some conventional symbols are also in the figure 4.2. So now let's begin. Now start reading. It is the third important component of a map. It is possible to draw on a map the actual shape and size, different features such as building, road, bridge, tree, railway line or a well. They are shown using certain letters, shades, color, picture and lines. These symbol gives a lot of information in a limited space. With the use of these symbol, map can drawn easily and simple to read and simple to understand. If you don't know the language of an area, please listen carefully. If even you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from the map with the help of these symbols. Map have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the using of these symbols. These are called conventional symbol. As I told you that symbols are used by all, and symbol is also help in everywhere, in every situation. So or the international agreement is also for the symbol, and this is called conventional symbols. So you just look at the figure 4.3. There is a symbol for mosque, church and the temple. There is also a symbol for river, well, and there is a symbol for broad gauge railway station, meter gauge railway stations and metalled road or unmetalled road. So now you understand that the symbol play an important role, and symbol we will use as a universal language. And if you don't know the language of a particular place, so by a symbol you easily understood the things. Now we also use various colors, like for trees we use green color, for water we use blue color, for mountain we use brown color, and for plateau we use yellow color. So yeah, color also play an important role. Now come to sketch. A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not on a scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. जैसे कि आपको बोला जाता है कि आप को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखा हो, या आर्किटेक्ट हैं या एक सिंपल आर्किटेक्ट तो एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है, लेकिन अगर आप हम घर में भी एक रफ़ ड्राइंग शो करते हैं कि यहाँ पर हम इस सेट, यहाँ पर हम ये वाला रूम इतने एरिया में होगा, उसके बराबर में किचन है। जैसे कि आपको बोला जाए कि आप कहीं गए हो और वहाँ पे बताओ आपको क्या क्या लोकेशन था, तो आप ऐसे बताते हो कि पास में एक रूम था, रूम के बराबर में किचन था। तो दिस इज़ कॉल्ड स्केच। स्केच इज़ अ रफ़ ड्राइंग। स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, जो मेमोरी बेस पर होता है। आपको आँख बंद करते हो तो आपको सब याद आ जाता है ना कि कौन से पर्टिकुलर प्लेस पर कौन से सामान रखा है। तो स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड spot observation, not a scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places.
जो आपने देखा होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है या किसी को बोला जाए कि आपको उस पर्सन के बारे में बताना है, तो आप उसको रफ बताते हो कि वो इतना टॉल था, उसकी नोज़ जो थी वो ब्रॉड थी, जो और लिप्स थे वो कैसे थे, आइज़ कैसी थी, आइज़ की शेप क्या था, इसका कलर क्या था, उसका हाइट क्या था, बालों का कलर क्या था। तो ये सब आपके एक बार जब आप किसी पर्सन को देखते हो तो आपकी मेमोरी में जो भी होता है वो आपके होता है, फिर आप जब आइज़ क्लोज करके उसके बारे में आपको बताने के लिए बोला जाता है। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड स्केच. If you want to go your friend's house but you don't know what the way, your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without a scale and is called a sketch or a map. Sketch map. So अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है but you don't know the way how you will reach, तो then what is the next step? Without using scale, he or she will make a picture that you have to go straight, then there is a T point, on that T point you have to take right or a left to reach to my house. और देर इज़ अ पर्टिकुलर लैंडमार्क ऑल्सो, लैंडमार्क की वहाँ पर एक पर्टिकुलर शॉप है, अग्रवाल का शॉप है या बीकानेर है या जो भी कोई फेमस एक वो होता है, तो वहाँ से आपको राइट लेना है. तो ये क्या है? विदाउट यूजिंग स्केल दीज थिंग्स आर कॉल्ड स्केच और मैप. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ नॉट दिस इज़ बेसिस ऑन मेमोरी और ऑब्जर्वेशन. आपने देखा होगा जब आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो आप बाहर देखते हुए चलते हैं कि यहाँ पर ये है, इसके बाद जो है हमें इस ये वाला जो पिलर आएगा, उस पिलर के पिलर नंबर 174 आएगा, तो हमें क्या करना है? टर्न लेना है. या पर्टिकुलर एक शॉप आएगी तो हमें क्या करना है? टर्न लेना है. तो ये क्या है? ये सारे आपकी मेमोरी और ऑब्जर्वेशन से आप बताते हो. तो ये रफ स्केचेस हैं. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट. विदाउट यूजिंग द स्केल, it is a drawing without scale and is called a sketch or a map. Now a plan. A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which may sometime want to know. For example, the length and breadth of a room, which can be shown in a map. At the time we can prefer drawing drawn to scale called a plan. So now what is plan? Plan क्या है? स्मॉल एरिया के बारे में जब आपको लार्ज स्केल पर बताया जाता है. प्लान इज ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. ए लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच we may sometime want to know. For example, the length and the breadth of a room, which can be shown in a map. At the same time we can refer drawing or a space is called plan. So this chapter is over now. With this video you will get a PDF of the solved question answers. So you have to do in your copy, read lesson at least 2 times and try to do. Don't mark these answers. Try to mark or try to do your back exercise your own. We will discuss in our Google Meet. Till then you just read your chapter, and if you have any doubt we will discuss in our Google Meet. Be on time on Google Meet. Till then, take care. Bye bye.